राज गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ सत्संग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तदंतर my beloved Gurudev, प्रविष्टम विष्णुपाद Bhaktivedanta Swami Maharaj, Nitya Narayan Goswami Maharaj, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Swami Maharaj, and all the Vaishnavis who are here, all the Brahmins that who are here, all the gentlemen, all the those who are here to listen Hari Katha, the organizer of the event, and all the family, all his family members, to everybody. To everyone I offer my Dandavat Pranams, and my beloved mothers. May you all accept my respect and obeisances. Today is Srimad Bhagavad Katha's second day. Guru Gauranga Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and the presiding deities of the Dham, the presiding deities himself, Mahadev is also. Because of his sourceless mercy, we all are here today. And one who destroys all obstacles, Narsingadev, and by his mercy also, this program is running smoothly. And yesterday, I expressed about the glories of Srimad Bhagavatam, that what are the fruits of hearing it, and if you listen, then all the sins get destroyed. As like sun rises from the sun rises and it destroys all the darkness, the brightness of the sun. In the same way, this Bhagavad is like a sun. It illuminates the life of all the jivas, and it eradicates all the darkness. And simultaneously, in the heart of jivas, Krishna Prema manifests because of hearing this. Even the biggest of sinners, even their sins will be destroyed if they listen to Srimad Bhagavatam. Transmitter is working okay? And in this place, those who have contributed in the organization of this, they are very, very fortunate, because the demigods, they to listen to this Bhagavad Katha, they are also hankering. For this regard, when Sukadeva Goswami Pad in front of Parikshit Maharaj, when he started to speak Bhagavatam, at that time the heaven's king Indra, with Amrit Kalash, he entered and said, he said, okay, give this nectar of immortality to Parikshit Maharaj, and in return give us this nectar of Bhagavad Katha Amrit. After hearing this Katha, Sukadeva Goswami Pad, he giggled, he laughed. Say, ha ha. Where it is extremely the most rare, most expensive jewel, and in return they want to offer a piece of glass. Because Bhagavad Kathamrit is not ordinary. Second thing is that this Bhagavad Katha, this nectar, Amrit, this Deva Durlabh,
बड़े बड़े संत महात्मा big Santa Mahatmas हजारों साल तक for thousands of years, साधन भजन करके भी even after doing lots of sadhan bhajan, अमृत प्राप्त करने they cannot attain this ऐसे nectar. दुर्लभ Such rare भागवत कथामृत को Bhagavad Kathamrit. सुखदेव गोस्वामी Sukadeva Goswami Pad himself, he महाराज को पान कराया। recited this and gave this nectar of bliss to Parikshit Maharaj. The nectar coming from heaven is also not less. For that, भगवान को भी even God himself, चार बार he had to take 4 incarnations. ये सर्गामृत ये भी दुर्लभ का है। Swargamrit is also very rare, very special. सर्गामृत से But भी from Swargamrit, दुर्लभ। even more rare is this Bhagavad Kathamrit. इसलिए देवता For लोग this regard, the demigods, सर्गामृत को छोड़ करके भागवत कथामृत को पान they करना want to take Bhagavad Kathamrit because it's so unique and unparalleled. इस सर्गामृत This Swargamrit, for this Swargamrit, भगवान nectar coming from heaven, Vishnu had need to take 4 incarnations. When देवता लोग the demigods और असुर लोग and demons, समुद्र मंथन करते when they were churning the ocean, और उस समय at that time, मंथन के दंड के रूप में वैनाक पर्वत के रूप में सब भगवान को प्रकट होने पड़ा God he had to appear, और and he manifested in form of a mountain. समुद्र के जल And में but that mountain was drowning in the ocean. Then God he manifested in form of a turtle, manifested in form of a turtle, and he और स्वयं held the mountain on his back. वह पर्वत को धारण किया। इसलिए भगवान की एक But this अवतार भी regard, कहा जाता God's है one incarnation name is कच्छप अवतार कहा जाता है। Kashyap Avatar, कछुआ भी अवतार। turtle incarnation. दूसरी Second is that we needed something a turn to churn the ocean. बासुर की नाग के रूप में भी Appeared in form of Vasuki Nag. और चौथा समुद्र मंथन के पश्चात After Samudra Manthan, after churning of the ocean, अमृत जब निकले when he came out, देखो उस समय then देवता और the demigods असुर लोग and demons दोनों में both झगड़ा शुरू कर started to fight. कौन पहले पानी करे स्वयं भगवान विष्णु God Vishnu, असुरों के वंचित करने के he लिए to reject the demons from taking this nectar of immortality, अमृत and he wanted to पान give this कराने के लिए demigods for this regard. स्वयं He विष्णु Vishnu मोहिनी रूप manifested form of Mohini, मोहिनी मूर्ति Mohini Murti. इसलिए कहा जाता है ये That's why it is said सर्गामृत Swargamrit वस्तु नहीं है is not ordinary thing, किंतु तथापि but there, देवता लोग ये सर्गामृत but the devtas, परीक्षित महाराज के लेकर they gave this nectar of immortality to Parikshit Maharaj, से and भागवत कथा they पान करना चाहते want to drink Bhagavad Kathamritam instead of this, because they know it's very unique and unparalleled. But Sukadeva Goswami Pad, देवताओं की अनाधिकार समझ करके thinking that उनको भी पान नहीं कराया Sukadeva Goswami Pad sort of knew that the devtas are unqualified. That's why he did not give them this Bhagavad Kathamrit. To drink this nectar अधिकार भी वर्णन करते need qualification also. हैं श्रीमद् भागवत में In Srimad Bhagavat, Srila Vyasadeva ji 3 श्लोकों के द्वारा and 3 shlokas मंगलाचरण भी किया did Mangalacharan. मंगलाचरण का जिस कथा जिस श्लोक आदि Mangalacharan, these shlokas, when you recite these, जीवों की समस्त प्रकार मंगल all kind of inauspiciousness goes away and auspiciousness comes. नाश हो जाता है प्रभु के नाम से ही The holy names are so powerful, समस्त अमंगल all inauspiciousness goes away. इसे श्रीमद् For this भागवत regard, in Srimad Bhagavatam, श्लोक में in that shloka, श्रील वैष्णव जी किसी देव देवी की he स्तुति नहीं किया did not glorify any Dev Devi in the scripture. In other Puranas, he did so.
लिए कहीं कहीं कोई देव देव की स्तुति आती है। He glorified demigod, demigoddesses in other scriptures. In some place he said, सर्व विघ्न विनाश Sarva Vigna, he glorified Ganesh Ji, one who destroys all obstacles and is prodigies of good luck. किंतु श्रीमद् भागवत में But in Srimad Bhagavatam, उन्होंने डायरेक्ट रूप में directly साक्षात रूप में प्राक्पर परतत्व he glorified the undivided Supreme Personality of Godhead, the Supreme God Himself, Brahma and big demigods also, even higher than them. The Supreme God is glorified in these scriptures. यह मंगलाचरण In this Mangalacharan, के द्वारा ही by this वास्तव वस्तु की हम समझ पाते। we can understand the real thing if we know about the truth. Srimad Bhagavatam is a very unique अमृत ग्रंथ है। the scripture of nectar. इस ग्रंथ In this scripture, if you hear about this, then you study this here, there's the kirtan of this. जीवों की चरम कल्याण Jivas get the topmost benefit. कृति तप स्मरण श्रवण कीर्तन स्मरण के लिए This is a scripture that teaches our Shravan Kirtan Smaran. It's Amrit Premamay Granth, full of divine love. This is not just an ordinary book. It is a manifestation of God Himself. God, He manifested in form of this book in incarnation. This is a God's incarnation, this book. This is very pure, divine, transcendental book. It manifested from the inner core of the heart of Vyasadeva. Only by the inspiration of Narad Ji, this happened. This is not ordinary scripture. That's why it is called Sarva Vedanta Saram Srimad Bhagavatam Vishwate. It's the essence of all Veda Purana Upanishad. If you hear Srimad Bhagavatam and if you take this, then you won't get taste for anything else if you taste this. For this regard, in Mangalacharan, the truth is being expressed in the Mangalacharan. Mangalacharan is of three types. Is Vastu Nirdesh, Namaskar, and Asirvad, seeking the blessings. By this, Mangalacharan is coming. Vastu Nirdesh, like we address the object. What's the object? What's the subject? Defining what's the subject we are going to discuss. That subject, what is it? In Vedanta Sutra, Katha to Brahma Jigyasa. ब्रह्म के बारे में कुछ प्रश्न पूछना. He asked the question about who is the Supreme. ठीक उसी प्रकार श्रीमद् In the same way, in Srimad Bhagavatam, कहा जाता है. he said, वस्तु निर्देश आदि के Vastu Nirdesh. जिस विषय पर हम आलोचना करते हैं, The subject that we are discussing here is this, that who is the Supreme. We are doing kirtan of this. उसी की बताते जा रहे हैं. बहुत सुंदर. Very beautiful. वास्तव वस्तु के बारे में आलोचना है. The real thing is being expressed here. इसलिए That's why Srila Vyasadeva Ji, श्रीमद् भागवत he में in Srimad Bhagavat प्रमाण रूप में दे रहे हैं. जन्मादश्यतो अन्नयादिकृतश्चर्तेषु अभिज्ञासराट् तेने ब्रह्महृदा ज आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृडां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृषा धाम्नातेन सदा व्यक्तं गुहकं सत्यं परं धीमहि. जन्मादश्यत, जन्म आदि
समस्त विश्व की उत्पत्ति, all the existence is manifested from him. All universes have manifested from him. Tenu jatani jivanti. उपनिषद में प्रमाण, In Upanishad this evidence is coming. इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ हम देख रहे हैं, Whatever we see in this universe, स्थावर जंगम, Sthavar, Jangam, the entities that are walking, entities that are still, लौकिक परलौकिक, Lokik, Paralokik, those are in this existence, those are beyond this existence, everything, each and everything is manifested from स्वयं भगवान Parabrahma, the Supreme Personality of Godhead. इसको कहते हैं जन्म That's why आदि। Janma Adi. और भगवान की इच्छा से And by the सब desire of God, संरक्षित होकर के लाए। everything is being हम protected. संसार में जीवित हैं, We are alive in this world. इसकी इच्छा से हम जीवित हैं। By whose blessing we are breathing, we are alive. By the desire of God, we are alive. रक्षा करने वाला, God is the supreme protector. राखे हरि, If God wants to protect, no one can kill. And if God wants to kill, no one can protect. जब भगवान किसकी रक्षा करते If हैं, God he protects someone, उसकी कोई मार नहीं no one can kill them. सकता। और भगवान जिसको And if God wants मारने के to लिए इच्छा कर ली, kill someone, उसकी कोई रक्षा no one कर can नहीं पाएगा। protect them. इसलिए For this regard, सृष्टि स्थिति प्रलय creation, management and destruction, everything is happening by the desire of God. रक्षित होता है, रक्षा करता है। Everything is managed by God. He is the supreme protector। And the supreme protector. और तीसरी कहा जाते हैं The next one is this, that सबको विनाश करने वाले वही भगवान। God प्रलय सृष्टि स्थिति प्रलय he destroys everything. He creates, सृष्टि स्थिति और प्रलय, manages and destroys. महाप्रलय में The biggest of disasters उस come. महाप्रलय में In that, सब कुछ ध्वंस हो गया। everything is destroyed. जिनकी इच्छा से By this भूख से, desire. भूख से, इंगित से सब कुछ कार्य साधन होता है। By his signal, everything is working down. पूर्व दिशा पर From the sun rises from the east on his instruction. जिनकी इच्छा से On his desire, वही सूरज that same sun, पश्चिम दिशा पर he अस्त हो जाता है। the sun sets down. जिनकी आदेश से वायु On his देवता desire, the Vayu Devta, the presiding deities of air, he says, जिसकी survive. इच्छा से And by his desire, वर्षा the rain आदि होती comes. है। वही प्रभु That same supreme personality of Godhead, भगवान, Parabrahma Bhagavan, जिसे कहा जाता है is called जन्मादस्य, जन्मादस्य। जन्म आदि। Janma Adi. और कहते हैं जन्म आदि रस विचार में भी कहा जाता In है। Rasa Vichar also, आदि रस, श्रृंगार रस, Adira Shringar Ras, समस्त रसों की मूल the essence of all rasas is this. The root of all rasas is Shringar Ras. 5 प्रकार के मुख्य रस होता है। 5 type of primary rasas, Shanta, दास्य, Dasya, सख्य, Sakya, वात्सल्य Vatsalya और मधुर रस। and Madhur Ras. और 7 प्रकार के गौण रस भी कहा जाता है। And 7 secondary also. वीर, विवत्स, करुण, Nirvivatsa Kurum. अद्भुत। इस प्रकार 7 Like प्रकार this. की गौण रस। There's 7 types of समस्त रसों primary की rasa. All आश्रय रूप में the shelter and object भगवान कहा जाता है। of all the rasas is this, अखिल the God. समुद्र सिंधु He is the ocean of divine rasa. कलित श्याम ललित राधा प्रयाण विधुर जयति। अखिल रस सिंधु का समुद्र, He is a rasa, ocean of rasa. भगवान Like this, समस्त रसों की God, He is the आश्रय विषय। shelter and object of all kind of रस rasas. रस वैसे जेवा लब्ध नंदिर भवती। उपनिषद में कहा In जाता है Upanishad, this is explained. रस की He is the बहुत स्वरूप है। embodiment of all rasas himself. भक्त के हृदय से And रस माधुर्य आस्वादन करना। he tastes the rasa from the heart of the devotees इस प्रकार also. कहा जाता है
जन्मादस्तु जगत् So the shloka is coming Janmadasya Jata Anayadi Satarteshi Krishna. और समस्त प्रकार की In all kinds of, विषय में अभिज्ञ he is expert in all kind of arts. He knows everything, all subjects. ऐसा कोई वस्तु There नहीं is not any subject that he does not know about. इसलिए भगवान की कहा For this जाता है reason God is called सर्वज्ञ, Sarvagya, one who knows everything. सभी वस्तु को जानते हैं, Knows each and everything. सर्वत्र विराजमान है। He is manifested everywhere, in every तदन particle. यतुत्त विदस्तत्तं जद्गणमत्तर, ब्रह्मेति परमात्मति भगवानिति शब्दति। एक ही अखंड Akhanda, परतत्व कहा God is only one. है, One God, अनडिवाइडेड। undivided element. वही एक ही अखंड वस्तु That same undivided element तीन रूप में manifests in three forms. ज्ञानियों के निकट, In front of no people who seek knowledge, he manifests form of Brahma. योगियों के In front निकट of yogis, परमात्मा के रूप में manifests form of Paramatma, दिखाई पड़ता है। a super और soul. भक्त के निकट And in front of devotees, सर्वैश्वर्यपूर्ण रूप में he manifests his most opulent form in front of his devotees. कहते हैं पदम तत्तम Paradanta Vidasta, जज ज्ञानम अद्वयम Jajagyanam Atyam. और अद्वय ज्ञान परतत्व नद्वयम इति अद्वयम नॉन एक ही परतत्व Non-divided is he's one, but he's manifesting different जैसे जैसे forms. भक्त होते हैं Depending on the mood of the उस devotees, भक्त के निकट he manifests his forms accordingly, depending on the mood of the devotee. दस भक्त के निकट In front of a Dasya devotee, रामचंद्र के रूप में प्रकाश he manifests form of Ramchandra, जैसे हनुमान जी like for Hanuman. श्रीनाथे जानकी Srinathe Janaki Nathe. अभेद परमात्मनि तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवनम। शुद्ध दस रस के भक्त हनुमान जी कहते हैं Dasya Rasa devotee, pure Dasya श्रीनाथे devotee. जानकी नाथे Srinathe अभेद Janaki Nathe, परमात्मनि। Abhed Paramatmani. श्रीनाथ और जानकी Srinath and नाथ में Janaki कोई Nath, भेद नहीं है। there is no difference. नारायण रामचंद्र और कृष्ण Narayan, Ramchandra and Krishna, इसमें कोई भेद नहीं no है। difference between them. एक ही पर ब्रह्म भगवान The God coming from God. That's why Srinathe Janaki Nathe, Avede Paramatmani. परमात्मा तत्व तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवनम। But Ramchandra is my soul and heart. मेरे परम प्रभु My Prabhu is Ramchandra. मेरे जीवन स्वरूप। He is my life and soul. हनुमान जी की ऐसे निष्ठा Such a nishtha of Hanuman ji. अपने निष्ठा Towards- के अनुसार Depending on the nishtha, everything स्वयं happens. भगवान उस God भक्त के निकट दर्शन manifests his form, depending on the mood of the जैसे devotee. जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट भगवान उस स्वरूप में दर्शन देते हैं। He manifests his form एक accordingly. तुलसीदास जी Tulsidas ji, वृंदावन में पधारे and when he entered Vrindavan, came Mathura. और कृष्ण के सुंदर विग्रह के दर्शन किया He darshan of Krishna's और बोले, beautiful यदि form. He मेरे said, वही if आनंद देव my same राम हो worshipable मैं Ram, धनुष बाण then धारण करते हुए मैं प्रभु के दर्शन करना I चाहता want to take darshan of him holding bow and arrow. कहने के साथ ही साथ And he said देखो simultaneously, आश्चर्य है। the deities स्वयं transformed. कृष्ण Krishna himself, the deities of Krishna transformed into the deities of Ramchandra. धनुष बाण लेकर के Holding a bow and arrow, very beautiful, प्रकट हो the deities manifested. आज तक भी ये विग्रह है And until now, these deities are there in Mathura. परिक्रमा करते हैं आप In the Mathura Parikrama, कलिगेट के अंदर एक सुंदर स्थान है। आज तक भी उस स्थान है। this place is there in Mathura Parikrama. भक्त जिस प्रकार भगवान के दर्शन करना चाहते हैं Depending on the mood of the devotee, भगवान उस स्वरूप पर दर्शन करा रहे हैं। God he manifests his form accordingly. एक बार की कथा है Once there is a katha, ही द्वारकाधीश कृष्ण Dwarkadish Krishna, एक बार गरुड़ जी के बोले he गरुड़ said to जी Garud ji, जाओ किष्किंधा में go to Kishkinda, हनुमान जी विराजमान है Hanuman ji is को there, बुला के ले आओ। call him. देखो जब भगवान रामचंद्र लीला करके When पधार गए, Ramchandra he left after doing हनुमान Leela, जी को छोड़ करके he left Hanuman ji here.
विभीषण जी के छोड़ करके गए, He left Vibhishan here. दिवित वानर जी के छोड़ करके He गए, left Divit Vanar here. और And दंत के वो भी छोड़ करके गए। इस भक्त इनको छोड़ करके गए। so he left all these. विशेष करके हनुमान जी के बोले तुम यहाँ पर रहो। He said especially to Hanumanji, you stay here. और And हनुमान जी Hanumanji, आदेश प्राप्त करके after receiving instruction राम of Prabhu, जप करने लगे, कीर्तन started to करने chant name of Ram. लगे। गरुड़ जी आकर के बोले Garudaji came and said, आपके जादवेंद्र आपके स्मरण कर रहे हैं। Yadavendra is calling you. हनुमान जी बोले, Hanumanji said, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, Garudaji, my health is not मैं good. 2-1 दिन के बाद ही आ जाऊँ। I will come after a few days. गरुड़ जी उड़ते उड़ते Garudaji started to fly. भगवान के पास आकर के बोले, He came back to God and said, प्रभु Prabhu, हनुमान जी की तबीयत ठीक नहीं, Hanumanji is unwell, so he will come after a few days. आएंगे। भगवान ने पूछा तुमने क्या समाचार दिया? God asked, what did you say बोले to मैंने me? बताया I told him, जादवेंद्र आपको Yadavendra is calling you. The king भगवान of ने the कहा Yadav तुमने गलत dynasty is समाचार calling you. He said, दिया। you given wrong news to him. भगवान ने कहा God said, जादवेंद्र नहीं, not तुम Yadavendra. जाकर के समाचार दो। Go tell him, राघवेंद्र आपको Raghavendra is calling you. बोलो राघवेंद्र की जय, भगवान रामचंद्र की जय हो। देखो गरुड़ जी पुनः Garudaji again, आकर के he came, हनुमान जी के बोले, said to Hanumanji, हनुमान जी मेरे थोड़ा गलत समाचार। oh, I gave you a wrong message. बोले क्या? Let me correct it. So he said, asked, why? What's the message? जादवेंद्र He नहीं, said, not Yadavendra. जादवेंद्र मान The king of Yadavas, no. The king of Yadavas dynasty. Not him, not him. राघवेंद्र Krishna, the king of Raghu dynasty, Ramchandra is calling. Raghu meaning Ramchandra. बस Raghavendra. इतने सुनते ही When Hanumanji heard this, simultaneously the heart of Hanumanji melted. आंखों से आंसू टपकने लगे। अहो His tears fall down from his eyes. He's like, oh, my worshipable is calling me. गायत्री मंत्र जप वहीं पर समाप्त करके बाद They stopped chanting Gayatri Mantra, then he took a jump. The Ramchandra ki jai. देखो Then, प्रभु की नाम श्रवण करते ही after hearing this, हनुमान जी Hanumanji, क्षणकाल एक समय के लिए भी even for 1 millisecond, he did not wait. He quickly jumped and he go. और हनुमान जी जब आने And लगे when Hanumanji was coming, उस समय स्वयं at that time, भगवान God himself, Krishna, रुक्मिणी देवी को बोले रुक्मिणी he said to Rukmani सीता Devi, देवी के रूप धारण manifest form of Sita Devi देखो रुक्मिणी now. देवी सीता जी के रूप धारण Then she manifested form of Sita Devi, बलदेव प्रभु and बोले, Baladev आप Prabhu लक्ष्मण के रूप धारण he करो। manifested form of Lakshman. स्वयं बलदेव प्रभु लक्ष्मण Baladev के रूप Prabhu धारण manifested form of और Lakshman, स्वयं कृष्ण and Krishna himself राम स्वरूप धारण। manifested form of Ram. देखो कितने सुंदर रूप It's a धारण। very beautiful form तीर धनुष with bow and arrow. लेकर के खड़े हो। He stood. राम लक्ष्मण जानकी है। कितने सुंदर रूप रूप में Very प्रकट हुए beautiful form. भगवान कृष्ण। और हनुमान जी And Hanumanji, प्रणाम किए। he came and gave pranams. बोले प्रभु मुझे बुलाया कहाँ जा, बहुत समय से मैं दर्शन नहीं। I did not take darshan for so long. भगवान भक्त के दर्शन के लिए ही तड़पते रहा। God is also hankering to give darshan to his भगवान devotees. रामचंद्र बोले जाओ हनुमान, Ramchandra said, go Hanuman, अपने स्थान पर जा। go back to your place now. और हनुमान जी प्रणाम करके And Hanumanji gave pranams, फिर पुनः and then again किष्किंधा की ओर चलने लगे। he went towards और Kishkinda, तब गरुड़ जी and then Garudaji, आ रहे हैं बीच रास्ता में। he met on the बोले way. आप तो गायत्री मंत्र He's like, जप oh, करके you were तो chanting प्रभु Gayatri मुझे Mantra. बुलाया कि Hanumanji said, I cannot stay even for 1 millisecond if my worshipable is calling me. When the worshipable, see the nishtha that he has towards his worshipable. This example is coming from इसलिए here. राजन भक्त जिस प्रकार भाव लेकर के भगवान के निकट आ जाते हैं,
भगवान उस भक्त के उस स्वरूप को दर्शन Depending on the mood of the devotee, God he manifests his form. निष्ठा रस के अनुसार Depending on भगवान their nishtha, their rasa, type of rasa, God he gives darshan. इसी प्रकार हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं Acharya Pad, they explain इसलिए कहा जाता है राम और कृष्ण में कोई there's no भेद difference नहीं। between Rama and Krishna actually. यदि कोई कहे If someone say राम एक स्वयं भगवान अलग भगवान Ram है is different और and कृष्ण एक Krishna अलग is भगवान different, है, ये अपराध माना this is जाता है। offense. राम और कृष्ण में कोई भेद No नहीं। difference between Ram and सिद्धांत Krishna. तत्व भेद इसमें Siddhant Tattvahishu, Siddhant शास्त्रीय Tattvahishu सिद्धांत के Vati. अनुसार As per Shastra Siddhant, भगवान नारायण Lord Narayan, Krishna, और रामचंद्र में कोई भेद नहीं। no difference between ये सिद्धांत Ramchandra तत्व भेद है। शीशो कृष्ण and Krishna. एक ही तत्व है Tattva is one, Bhagavat Tattva. किंतु रसनत कुतुस्सते कृष्ण रसम But व्यवस्थिति he is divine ocean of rasa, many किंतु many रस rasas. विचार में In rasa vichar, उसमें थोड़ी सी the difference is the special qualities you can analyze in different इसमें तो forms. बहुत सिद्धांत हमारे आचार्य All these बताते हैं। siddhantas expressed by ब्रह्मा आदि बड़े Acharyas, देवता Brahma, लोग big demigods also, इस विषय की भी they समझ नहीं पाते cannot समझ नहीं पाते। understand, comprehend प्रभु के ऐसे this कभी subject. कभी लीला आदि देख करके After seeing some pastimes, उनकी भी they, मस्तक भी their head also सुनना शुरू कर देते। cannot प्रभु ऐसे understand and कहते हैं process. जैसे लीला आदि करते And how हैं। beautifully the pastimes are being आगे performed by the जाकर के हम Supreme. We are going कृष्ण further लीला वर्णन करते when we हैं। expressing Krishna Leela. ब्रह्मो विमोहो ने You will लीला hear about the वर्णन abduction of cows and calves of स्वयं Krishna by ब्रह्मा Brahma. जी Brahma himself, की विचार करने लगे with 4 heads, he could कृष्ण not स्वयं understand भगवान है, Krishna is God साधारण or an ordinary baby, गोप बालक है। ordinary cowherd यही boy. ब्रह्मा जी के मन में संशय आ गया Brahma ji had this doubt. जिसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी Brahma ji, for this कृष्ण के reason, गोप बालक और बछड़े को जो है he abducted the cows, the friends of Krishna, calves and cows of और calves and इसी friends को of Krishna. स्वयं भगवान कृष्ण Then Krishna, उनकी भी प्रतीत कराया विश्वास दिलाया कि मैं he साधारण को बालक नहीं gave him मैं परब्रह्म भगवान evidence that I am the supreme, I am not an ordinary boy. जैसे ब्रह्मा God, he showed him this. नतमस्तक होकर के Then Brahma, he bowed down his head तो स्तुति आदि and करते glorified हैं। him. जिसको कहा जाता है ब्रह्म स्तुति भी कहा This is called Brahma Stuti, glorification by Brahma. दसम स्कंद में In 10th canto of Srimad Bhagavatam, ब्रह्म स्तुति उसमें Brahma Stuti is explained. 14th चैप्टर में In 14th chapter, ब्रह्म it's स्तुति there. ब्रह्मा Brahma जी Stuti, Brahma ji, कितने स्तुति आदि के नौमिष्टति अब्रबहुषे त्वरितम दराय कितने स्तुति आदि करने लगे glorified many भगवान things. कैसे सुंदर God so beautiful, सब glorifications are coming. कहने की यह तात्पर्य So what I'm ब्रह्मा trying to आदि say लोग here is the देवता Brahma लोग and भी big demigods also, समझ नहीं पाते even they cannot कैसे लीला है। understand the उनकी glories of स्वरूप, God, His form, उनकी क्रिया आदि His activities, इसलिए स्वयं भगवान गीता में the divine कहते and हैं transcendental. That's what God is saying in कर्मों जो में Gita. दिव्यम जो व्यक्ति तत्व The activities of God are transcendental. The birth and activities, all the karmas, they are transcendental. जन्म कर्मों में Janma karma chame, दिव्यम divyam. दिव्य शब्द के अर्थ होता है The word divya means divine transcendental. जिसकी साधारण लोग समझ नहीं पाते Ordinary people cannot understand this. बड़े बड़े टीकाकार भी Big समझ नहीं common, पाते even the big scholars cannot understand. प्रभु कैसी सुंदर लीलाएं जो Such are the beautiful leelas go happening in Braj. इसलिए कहते हैं For this regard, स्वयं भगवान सर्वभाषा भी की God, He knows all languages. समस्त प्रकार की भाषा भगवान जानने वाले लैंग्वेज He knows all languages. ऑल लैंग्वेज सर्व भाषा वेद सर्व एक भाषा चिट्ठी वेद. से लेकर के ब्रह्मा की सबकी भाषा जानने He knows from ant to an elephant. He knows everything. He knows the language of dogs. एक पशु पक्षी सबकी From all भाषा entities, all living entities, language is known by. भगवान उसकी कहा जाता है It's what. हम जिसको भगवान कहते हैं We say, oh, He is God, He is God. But we must know what are the qualities of God. Who is God? We must study in scriptures. अपरतम अनतापरतम जस समर्थ सब भगवान ही थी बच्चे जो होने वाला है उसके भी बिगड़ सकता है जो बिगड़े वाले God can change what's about to happen, what's meant to be destroyed, He can protect, and what's meant to be protected, He can destroy. God can do anything He wants. अनतापरतम जस समर्थ
इति भगवान वच्य सर्वभाषा knows all languages. और सब जगह में वो रहते हैं. Everywhere he resides, everywhere. There's not a place where he does not live. अनुरूपी महतो भी महान. अणु से भी अणु खुद से भी. Even the tiny and tiniest of element, अब बृहत God exists, and he can be as huge as possible. As tiny, the most tiny and most huge. Brahma, Parabrahma, the super soul. Bringhati, Bringhayati Brahma. With the element Bring. Is so huge. स्वाभाविकी ज्ञान बालक क्रियाचो उनकी अनंत शक्ति के आधार से This inconceivable potency, this infinite in potencies. He has infinite potencies. इसलिए कहा जाता है For this regard, this Parabrahma, the Supreme Personality of Godhead. और And यही स्वयं भगवान this God, Krishna, वैकुंठ में नारायण के स्वरूप in Vaikuntha, he manifest form of Narayan. अयोध्या में In Ayodhya, manifest Ramchandra. द्वारिकापुरी में In Dwarka, द्वारिकानाथ in form of Dwarkanath Krishna, विराजमान होते हैं. it's there. मथुरा धाम में मथुराधीश In के Mathura, रूप में Mathura, और वृंदावन and में Vrindavan, दिग्विजय जो मुरलीधर श्याम two-limbed form holding flute, जतिरथ Shyam सुंदर Sundar, दिग्विजय मुरलीधर श्याम सुंदर Muralidhar Shyam Sundar. जिनके अंग कांति के द्वारा Through his complexion, विश्व ब्रह्मांड the billions of universes receive the light from his complexion. Such is his form. वो दिग्विजय मुरलीधर That same हाथ में who has two hands holding a flute, threefold bent form. ब्रज में In Braj, प्रकटित होते. he appears in Braj. इतने सुंदर स्वरूप है. Such beautiful form is of him. बंतरे दिग्विजय मुरलीधर श्याम सुंदर जिनके इतने सुंदर रूप Very, very beautiful divine transcendental form. If someone takes for to take darshan of this, everyone is, अवतार भी बड़ा even his own incarnations are hankering to take this own darshan. इतने सुंदर रूप Such is the beautiful form of Brajendra and Krishna. So beautiful. When you give them beautifully, he plays the flute. For this regards, Sukadeva Goswami Pad is saying, जब कृष्ण when Krishna वेणुवादन करते plays the flute वंशी बजाते और सभी के हृदय को and he द्रवीभूत कर melts the heart of everyone, स्थावर जंगम बन जाता है और जंगम स्थावर बन जाता है. the still starts to move, and the things that moves और become स्थिर still. वस्तु चलना शुरू कर देती है. नक्तस्तदा तद्वदार्थ मुकुंद गीतम गोविंद के वेणुध्वनि The sound of flute of Krishna is like this. वृंदावन की नदियां The rivers of Vrindavan, Mansi जमुना Ganga, आदि नदियां भी Yamuna rivers, they प्रवाहित होना स्थिर हो stop flowing. इतने सुंदर. Very beautiful. Also. The cows, फिर घास खाना बंद कर they देते. stop eating grass. तावश्य कृष्णम को नृत्य वेणु गीतम. इतने सुंदर वेणु के ध्वनि Such powerful is the sound of flute of Krishna. When Krishna plays it, और सभी लोग स्थिर हो जाते. everyone becomes still. गो द्विज द्रुमा हिरण्य पुलकान्न विभ्रमम. गाय The cows, पक्षी आदि birds. द्विजा माने पक्षी. Dvija means birds. Go, Dvija. Go means cow. Dvija means birds. And यहाँ तक भी even बछड़ा से लेकर के From calf सभी to- स्थिर हो जाते. everyone is still. Everyone is wanting to be absorbed in the sound of flute of Krishna because they have so much prem towards Krishna. ये समस्त वर्णन है. यहाँ All तक this भी is being हिरण explained. आदि Even the deers, गोविंद के दर्शन के लिए to take Govinda darshan, they are running. धन्नाथ मुरुगतयो हिरण्य एता जानंदन पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सहकृष्ण सारा पूजा दधुम विरच प्रणया बोलो कोई. श्री सुखदेव गोस्वामी पाद And पर Sukadeva Goswami Pad is explained. गोविंद के ऐसे सुंदर वेणु ध्वनि The sound of flute of Krishna. After hearing this, हिरण और हिरणी the female deer and male deer, बहुत दोनों के गोविंद को they start to run towards Govinda.
He takes और darshan, निकट में आकर के बैठ and जाते after हैं। coming nearby, विचित्र वेशम, विचित्र अहो, वेशम, रूप कैसे सुंदर, it's beautiful is the form of Krishna. After दर्शन seeing करने के this, लिए हिरण हिरणी निकट में बैठ जाते हैं। the male and female deer sit together and listen. And Krishna himself, वो हिरण हिरणी he comes सीट पर and he pats the back of the deer. भगवान के हस्त कमल की स्पर्श After receiving the touch of the hand और of वो हिरण God, हिरणी the deer, female and female deer, they melt, their heart melt, they cry. विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजा दुधम विरच प्राणायाम लोके पशु जाती है। All हिरण animals. हिरणी पशु जाती है, इसलिए गोविंद के साथ केवल आंखों की So they are animals, that's why they, with their vision, they exchange the language of love through their eyes. It's a very beautiful explanation. It's there. ये श्रीमद् भागवत में ये सब वर्णन In होते Srimad हैं। Bhagavad, this all is explained. जिसकी बात है कृष्ण के हाथ से जो वेणु The माधुरी flute in the sound of flute in the hands of Krishna is Venu. It's very very sweet. ये भावना है It's very very deep mood behind this. रूप माधुरी कृष्ण Rupa के Madhuri. सुंदर रूप, Krishna's form is so ये रूप की beautiful. शकल कौन वर्णन करता है? लीला There are no माधुरी words to इतने express सुंदर Leela लीलाएं करते हैं। Madhuri. He manifests so many beautiful pastimes. पहले मैंने कहा ब्रह्मादि Before I मंदिर explain देवता Brahma, even Brahma cannot understand. विस्मित हो जाते They get confused हैं। भगवान with his और वो इतने pastimes. सुंदर रूप, Very इतने beautiful सुंदर form. लीलाएं, शब्दों के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं। There are no words to explain इसलिए कृष्ण की this God. 64 गुण है। There are 64 qualities in Krishna, और उसमें 4 गुण and जो the है, 4 are unique and unparalleled. जिसके केवल गोविंद में विराजमान है। They are only in किसी Govinda. अवतार में नहीं। In any other incarnation, they are not there. रूप माधुर्य, Rupa Madhurya, माधुर्य, लीला माधुर्य, Leela Madhurya, वेणु माधुर्य, and Venu Madhurya. इतने सुंदर रूप Very beautiful form. किसी अवतार में देखा नहीं। It's not in any incarnation. इसलिए ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी की स्तुति करते जा रहे हैं। That's why Brahma Samhita is explained. भुवनेषु किन्तु कृष्ण संभवत् परम पुमानयो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह Ishvara Parama अनादि Krishna. आदि गोविंद सर्व कारण कारण। The cause of all causes. समस्त कारण क्यों कारण? Causes of all causes. is the cause of all the causes. इस सर्व कारण कारण ईश्वर सर्वनियंत्रक, He is the supreme controller. ईश्वर Ishwar. ईश्वर परम कृष्ण Ishwar सच्चिदानंद Parama विग्रह, Satchidananda Vigraha. इतने सुंदर रूप सच्चिद Very beautiful आनंदमय form, विग्रह, Satchit Ananda. सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण Ishwar Parama Krishna. Satchit Anandamay Vigraha. आनंदमय अभ्यास। Anandamay Abhyasa. वेदांत सूत्र में कहा गया वह आनंदमय पुरुष के ही अनुशीलन In Vedanta Sutra it is explained, always meditate upon this blissful form of God. ईश्वर परम कृष्ण Ishwara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Anadir Adi Govinda. गोविंदयति, Govindayati. जो समस्त इंद्रियों की जो है आनंद देने One who is giving bliss to all the senses. वेद ब्राह्मण Veda, गोप, Brahman, गोपी, Gopa, Gopi. सभी की वो आनंद देते He हैं। is giving bliss to everyone. To all the jivas he is giving bliss. गो माने ब्राह्मण, Go means गो माने cow. वेद, Go also means Vedas. गो शब्द के अर्थ होता है Word go has many meanings. वेद पुराण उपनिषद सभी को आनंद देने वाले With गोविंद, bliss to all. गोविंदयति, Govindayati. इति Govinda.
इतने सुंदर प्रभु के नाम। Very beautiful is the name of God. गोविंद आदि पुरुषम, Govinda Adi Purusham. अद्वैतम अच्युतम अनादि Anandi Anantarupam. इतने सुंदर अद्वैतम अच्युतम अनादि Advaitam Anandi Ananta. He is infinite, non-divided. जिसके आश्रय करने से If you take shelter of him, the jivas never destroyed, never fall down. Achyuta, that's why this name is coming. अद्वैतम अच्युतम Advaita Achyuta Anadi Anantarupam, infinite forms he has. अनंत रूप धारण करना। Manifest infinite forms. वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्ति। वेद पुराण में जिसकी बखान करते Ved Puranas, this glorification is coming. स्तुति अधिक करते हैं। All scriptures glorify him. जहाँ पर जिनकी चरण कमल में All scriptures glorify him. बहुत सुंदर ये समस्त कथा। Very beautiful katha in Bhagavad this is mentioned. यही श्रीमद् भागवत Srimad स्वयं Bhagavad. नारायण Narayan, ब्रह्मा जी के he हृदय में explained प्रकट कराया and manifested this in the heart of Brahma. आदि कवि आदि कवि Adi Kavi, ब्रह्मा के हृदय में Brahma, in the heart of सारे Brahma, तत्व में all the tattvas प्रकाश कराया। manifested in his heart. अथवा आदि कवि हमारे Adi Kavi, Rupa Goswami Pad's heart, सन चैतन्य महाप्रभु Chaitanya Mahaprabhu, समस्त रस तत्व भक्ति तत्व प्रेम तत्व Bhakti Tattva, Rasa Tattva, Prema उनके Tattva, हृदय में प्रकट हुआ। all the tattvas manifested in his heart by the mercy of Mahaprabhu. मुझ्झन्ति जब सूर्य Mujanti Tat Suraya, the Devatas, देख करके विस्मित हो जाता आश्चर्य they see and they're surprised. है। तेजोवारी मृदं यथा विमो यत्र विसर्गो अमृषा अहो Oh, तेजोवारी मृदं अहो भगवान की वंशित ध्वनि the सुन sound of करके flute of Krishna is so unique. What, चंद्रमा भी even the moon स्थिर हो जाता है। stops moving. रास करने के लिए When वंश Krishna he बनाया। plays the flute to do Ras, Chandra Sarovar, until now in Giraj Govardhan Parikrama, if you go गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में in the shelter of Giraj Govardhan, in the lap of Giraj Govardhan, there is a beautiful place. It's called Chandra Sarovar. गोविंद के वंशित ध्वनि सुनते ही And hearing the sound of flute of Krishna, the Chandrama, अपनी गति को he जैसे stops moving. वहीं पर है, आगे नहीं है। तेज का तेज बारी जल The water, गोविंद के विनुद्ध ध्वनि सुनते ही ocean, rivers, when they hear the sound of flute, स्थिर हो जाता है। it becomes still. It just stops flowing. River stops flowing. Mukunda Geetam. मुकुंद के वेणुगीत सुनते ही After hearing the Venugeet from Mukunda, Yamuna, Mansi, Ganga, all the rivers, their flow stops. मृदंग पत्थर आदि क्या होगा, मिट्टी आदि देखो पिघल जाती। The stone melt. आज तक नहीं After hearing the sound of flute of Krishna, even today, if you go to Vrindavan, वृंदावन में आपको देखने के लिए ये आपको मिलेगा। you will find this in Vrindavan. काम्यवन में चरण In पहाड़, Kamyavan, there is Charana Pahadi. The stone melted. आज तक भी पहाड़ पर्वत भी Even till now, the mountain, even mountains आज melted. भगवान की चरण चिन्ह And with this sound of flute, imagine how much melt would come after receiving the touch of his lotus feet. The footprints are there on the stone. You can see the footprints of cows, deers, camels. Everything is there. You can go to the body. Wherever Krishna used to go for cow herding, when Krishna played the flute, the stones melted. चलने वाले वस्तु स्थिर हो जाते हैं, The things that move become stop to move, and things that are stopped they start to move. और देखो प्रभु की ऐसी लीला, Such are the leelas of God. ऐसे प्रभु की मैं ध्यान कर सत्यम I परम meditate upon him, Sattam Param Dhimai. श्री व्यासदेव जी Srila Vyasadeva इसी ji, श्लोक में पहली श्लोक in में his first shloka, वो परम सत्य वस्तु स्वयं भगवान को मैं
offer obeisances to the Supreme Personality of Godhead. He directly addressed the Supreme Personality of Godhead without glorifying any demigod, demigoddess. Glorifying Brajendanandan Shyam Sundar. That's why Satam Paramadimahi is coming. Meditate upon him. In Kali Yuga, the absolute truth is to chant holy names. That's why in this shloka, the people are commenting in the scriptures, in the start of Bhagavatam there is Naam Sankirtan. Why? Because in Kali Yuga, Kevala Naam Adhara. कलयुग में कुछ नहीं, नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. Naam Sankirtan. Once just have faith in the holy names, everything will work out. नाम संकीर्तन Sarva Papa Vinashati. All sins are destroyed when you chant holy names. All sins get destroyed, and also simultaneously Prema Bhakti manifests in the heart. Namadhara. वही नाम ही साक्षात भगवत स्वरूप. नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम. नाम और नाम में कोई भेद नहीं. The difference between the God and himself, but yet in Kali Yuga, the glories of the holy name are more potency and more power is present in the holy name in Kali Yuga. All the potency of God, even more than that, is manifested in the holy name. नाम में जिसकी रुचि नहीं हो जाता, हजार श्रवण में भी उसके फल नहीं होगा. इसलिए हमें It's very, very important to have taste towards chanting holy name. That we should always endeavor. So to develop taste, what is the fruits of listening to Bhagavad Katha? The taste will develop into chanting holy name. Brahma, Mahadev, all the demigod, demigoddesses, all the big, big personalities. What are they doing? They're chanting these holy names. Everyone has a bead bag in their hand. Everyone has bead japamala in their hand. See, all our devotees also, they have this japamala. See, you hold, I'm grabbing this in my hand, this thing, japamala. That's why Brahma with his 4 mahats, he's chanting Krishna, 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 Hare. Krishna, 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 Hare. Krishna, Krishna, Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nama Sankirtan. All sins are destroyed if you chant holy names. अहो समस्त दुख के हरण करने वाले हरि Hari he सबों के पाप को हरण करने वाले steals the sins of everyone. एकमात्र नाम संकीर्तन Om through Nama Sankirtan. इसलिए श्रीमद् भागवत Srimad Bhagavat प्रारंभ हुई it started with Nama Sankirtan. नाम श्रीमद् भागवत के बीच में मध्य में नाम की महिमा कीर्तन और Middle also the glories of holy name is expressed, अंत में and at the end also same नाम की महिमा glories of the holy names are expressed. प्रथम स्कंद में The नाम first की महिमा, in the start, स्कंद में in the first canto it's there, in the sixth canto और and the 12th 12 canto, स्कंद में the नाम glories of the holy name expressed. नाम की महिमा, प्रभु की नाम। इस सारी कथा की सुनने की सार क्या है? What is the benefit of listening to all this? What is the essence? Just we should develop faith towards the feet of God. सबकी फल क्या है? प्रभु के नाम में रुचि है। Everyone must develop faith in this chanting holy अंत में names. अंतिम समय में At the end, दो शब्द two हमारी words जिया से निकल गए। come, may they come from our tongue when we die. राधा नाम, Ram Naam, Krishna Naam, Radha Naam. इतने सुंदर Very beautiful नाम they की are. महिमा The glories of the holy names are like this. In scriptures it is mentioned. इसलिए प्रथम That's why in the first sloka, वस्तु निर्देश Vastu Nirdesh, the subject is being defined. That what is absolute truth? What is the subject? God, the supreme absolute truth. In the next sloka, वर्णन किया। it is explained that धर्म प्रज्जित कैतवत्र पर्व निर्मत्सनां सतां वेदं वास्तवम् अत्र वस्तु सेवदं तापत्र उन्मनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते हिंवा परिरेश्वर सद्दो हृद अवरुद्धते अत्र पृथिवी शुश्रूभि तत्क्षणात्। अहो कितनी सुंदर श्रीमद् भागवत very beautiful is Srimad Bhagavatam. वर्णन होते जा रहा है। An explanation is coming there. श्रीमद् भागवत Srimad Bhagavat. महामणि It is the biggest jewel. कर्म निर्मतना होता। ये श्रीमद् भागवत Srimad Bhagavat. निर्मत्स Nirmatsa. महात्मा की You must listen from Santa Mahatma संत Bonafide. महात्मा की वंदनीय है। इसलिए कह रहे हैं That's why it is explained here. Don't listen from a matsar, one who has jealousy. It's not for them. धर्म प्रज्जित Dharma prajito. प्रकृष्ट रूप में Very clearly it is explained here. धर्म प्रज्जित कैतव धर्म में त्याग देना चाहिए। कैतव माने Gita means कपट, छल, hypocrisy, कपट, duplicity. This should be given up before studying this pure scripture. जब तक हमारे हृदय में In the heart, छल कपट रहेगा there is chal kapat. तब तक हम भगवान Till की then, प्राप्ति नहीं कर सकते। we can never attain God. आगे जाकर कीर्तन करेंगे। We will do one kirtan about this. पुतना मोक्षण लीला में In the Putana Mokshan Lila, I'll explain more. बताया ये पुतना के पुतना Putana is Putana. पुत माने पवित्र। Put means purity. Na means no. One who is not पवित्र pure. नहीं है, पवित्र। That is Putana, impure. जिसे कहते हैं पुतना पुतना Putana. है अपवित्रता इम्प्योरिटी। Full of impurity. जब तक मेरे हृदय में इम्प्योरिटी If there is impurity in their heart, मत्सरता sarta, जब तक मेरे हृदय में काम क्रोध if there is anger, lust, रहेगा is there, तब तक till then, भगवान कैसे प्रकट होगा? how will God appear in the heart? इसलिए पुतना For this मोक्षण regarding लीला Putana में- Mokshan Lila is being expressed. इसलिए कहते हैं धर्म प्रज्जित
Dhamma prachitto. ये तभी धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति की वंशा हम इच्छा नहीं करेंगे. Don't desire dharma, artha, kama, moksha. The scriptures are teaching this. We should not desire for them. Dharma, artha, kam. Three things. Chaturvarga is mukti, liberation. And the fifth is prema purushartha. That's why dharma prachitta kai tavo. Give up kapat dharma. Srimad Bhagavad anyhow. It does not give shelter to any duplicity. That's why I need to give up these things. Duplicity, treating propensity. In Srimad Bhagavad, this teaching is coming. Only sadhus who have clean, pure heart can taste the bliss of this Bhagavatam. No one else. God Himself. That is called absolutely truth. Absolute truth. Srimad Bhagavad, the absolute truth is being explained in Srimad Bhagavatam. The absolute truth is God. And the God is being glorified here. You need to realize this. It gives all kind of auspiciousness. He helps everyone, delivers everyone. Adhyatik, Nadhitik, about these three flames of Maya. God destroys these three. He ends all the miseries and troubles. He throws away the sins from their roots. If you listen Bhagavad Katha, all the sins get destroyed from their roots. Even the sins, even the seed of sins, even the propensity to commit sins also, the desire to commit sins, it goes away from the root. Such beautiful is the scripture. Oh. With big words, this Bhagavad is being explained. Simultaneously, when this desire comes to listen Bhagavatam, God, He manifests in the heart. He comes and sits down, avaruddhate. He comes and sits down in the heart. And then in the heart, prema manifests also. That's why blessings are being given. The Srimad Bhagavad, what are the fruits of listening to this? Prabhu in the heart, He comes and sits down in the heart. And in third shloka, there is Mangala Charan. The qualifications is also being gifted with the listening Mangala. Pivat Bhagavat Rasamalayam Muhuraho Rasika Bhugi Bhavuka Nigama Kalpatarur Galita Phalam. Kalpatarur Galita Phalam. Kalpa Vrikshaki. The Vedas are like a Kalpa Vriksh. Very beautiful, tasty, delicious seeds. Without any seeds, without any peels. Very, very beautiful, sweet, ripe fruit. That fruit with the beak of parrot is being tasted by that Shuka parrot, and through the flow of Guru Parampara,
धराधाम में this fruit is manifesting in this material world सुख मुखात for the benefit of the jivas. पीवत भागवत रसमालयम अहो ये अहो। श्रीमद् भागवत Srimad इतने Bhagavad, सुंदर स्वादिष्ट very beautiful, ये कौन tasty, पान करते हैं? delicious. Who tastes this? रसिकर भावुक है। Rasik and Bhavuk, those who are मुहुर Rasik, जो they हर taste the bliss. क्षण में Every second, रसिकर भावुक जन the Rasik, इसके आस्वादन they taste the bliss constantly. सभी लोग आस्वादन कर नहीं पाते। Everyone cannot जिस taste प्रकार this bliss. देखो As like, for example, भ्रमर bumblebee, it और मकरंद में पवित्र से मधु के जैसे आस्वादन tastes the nectar from the सभी lotus. आस्वादन कर नहीं पाते। Everyone cannot do this. भ्रमर में The black bee शक्ति है। has this power to वो do कमल so. की मकरंद को It enters inside the pollens of the lotus and tastes the nectar from lotus. मच्छर है A mosquito is there, fly is there, but they cannot do this. और भ्रमर है। But black bumblebee can do this. Bee अलग can अलग do स्थान this. पर बैठते हैं। Sits in other places. फ्लाई The flies स्थान पर बैठता है। sits in dirty places, other places, wherever there are dirty things, वहीं पर बैठता है। contaminated items, the flies go there. The blood, mucus, it goes there. वो अच्छा लगता है। They like it. और And मधुमक्खी fly, वो कहाँ बैठते हैं? where does the fly सुंदर sit? फूल खिले हुए हों, वहीं It पर sits जाकर on बैठता है। beautiful flowers. और भ्रमर Black and Brahmar, कमल की sorry, मकरंद की जगह। Brahmar, it only goes towards the lotus. ये Black तीन bee only उदाहरण go. The three examples are coming. इसलिए So fly bee and black Brahmar इस श्रीमद् bumblebee. भागवत की रसमाल So Rasik, they taste the divine melody of the scripture. कैसे? How? भक्त के संग में, साधु संग में। With the devotee association, this is possible. But just become the श्रोता को कहा गया, black bee. कैसे बने? All listeners must become like black bee. जैसे मधुमक्खी Like black bee, like a honey bee collects honey. इसमें भी उदाहरण देते हैं। The example it's coming like this. मधुमक्खी जो है A honey bee वो मधु संग्रह करके collects the honey वो and it stores एक घोंसला बना ले, in the beehive. किंतु देखो वो कुछ But समय look, के बाद after some time, भालू अथवा मनुष्य आकर उसे the bear and humans come and they तोड़ करके break the beehive and they steal the honey. चला जाता है। और भ्रमर क्या करता है? But black bee, भ्रमर कई it does not घोंसला व कुछ चक्कर make any beehive or any house of its own. वो कमलों के It चल just जाते हैं, मड़मड़ाते towards हैं, goes to सुंदर, lotus, विकसित, सुगंधित, very fragrant lotuses. It goes towards them and constantly they're tasting the nectar. उसी प्रकार In the same way, ये श्रीमद् भागवत की आस्वादन करने वाली those who taste this bliss of Srimad Bhagavatam, ऋषिका the Rasika Bhavika, they taste the bliss of ऋषि Srimad और Bhagavatam. भावुक जन इसका आस्वादन करते Only they can taste this हैं। इसलिए bliss. श्रीमद् That's why भागवतम ऐसे एक सुंदर Srimad Bhagavatam is a very divine, transcendental, अत्यंत sweet, delicious, प्रेममय फल है। full of divine love, fruit. This is special fruit. नित्य गोलोक वृंदावन धाम से ही प्रकट हुए। It manifests from Nitya Golok Vrindavan Dham. How? Through the flow of Guru Parampara, through the medium of Guru Parampara. पक गया Like if a fruit is ripe और वह यदि डायरेक्ट and if पेड़ से नीचे पड़े it falls गिरे, down from the tree, तो भीतर भीतर हो जाएगा। it will break. उसके फल कैसे तोड़ना? How to break the हाथ से fruit? लेकर के एक व्यक्ति उसके हाथ से One person needs to पकड़े, pluck it दूसरे के हाथ में, दूसरे के हाथ में दे, and needs इसी to give प्रकार to another person. Like if to pluck it properly, this is how the fruit. ठीक उसी taken प्रकार off. ये श्रीमद् भागवत रूपी If the fruit falls down from the tree, it will break. So the person needs to pluck it properly and give to other person. So like this, Guru Parampara is giving this fruit. ब्रह्मा जी को दिया So Krishna, God Himself gave to Brahma. That's why Chatusloki Bhagavata. और इसको से ब्रह्मा जी And then Brahma ji श्रीमद् भागवत की अमृतमय कथा को जो है He- नारद ऋषि के passed it on to Narad Rishi. वह नारद ऋषि Narad Rishi, श्रीमद् भागवत की व्यासदेव जी he expressed to Vyasadev ji. और व्यासदेव जी
Vyasadeva ji passed this on नारद ऋषि इस कथा को to Narada Rishi. भक्ति जोगेन मनसि सम्मक प्रणीते अमले अपश्य पुरुषम पूर्ण मायांच तदभास्वयं। देखो स्वयं Vyasadeva ji, नारद जी की कृपा से by the mercy of Narada ji, रूप में he भगवान की सारी लीलाओं के दर्शन took darshan of all the leelas, और दर्शन करके तब and then ऐसे अमृत को श्रीमद् भागवत के जगत में प्रकट करा। और इस श्रीमद् भागवत he manifested this nectarian scripture Srimad Bhagavat, and then this nectar was passed on to Sukadeva Goswami Pada. इसलिए कहा जाता है This is called Guru Parampara, how this flow is being coming. डिसिप्लिक सक्सेशन। Disciplic गुरु परंपरा succession. प्राप्त वेद वाणी This is the disciplic succession. सत्तं हरिम्यं परमं सर्वसत्यं रसाब्धिं तद्भिन्न संस जीवान प्रकृति कवलितान तत्पुंस्तंश्च भावः भेदा भेदं सकलम् अपि हरे साधन शुद्ध भक्तिं सद्धं तत्प्रीति उपदिशति जनान गौरचंद्र संस। इसलिए कहा जाता है This is called disciplic succession, the Guru Parampara. इस गुरु परंपरा This Guru Parampara Sampradaya, विचार जहाँ पर the Sampradaya must be is there also. इससे इतने सुंदर प्रेममय श्रीमद् भागवत Srimad कथा Bhagavad Kathamritam is so full of divine love, divine melodies. That's why परीक्षित महाराज जब when Parikshit Maharaj, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने लगे he was learning, he was listening to Srimad Bhagavad Katha. After some time, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते Sukadeva Goswami Pad says, हे परीक्षित महाराज Parikshit Maharaj, कुछ पान करना बोले नहीं do you want something to drink? आपके He said, no, से जो मैं पान कर रहा हूँ the nectar that I'm drinking from your mouth is enough and it's so fulfilling. I don't need anything else now. इतने सुंदर It's so tasty, भागवत it's so delicious, so beautiful, so sweet. That's why this is coming. सप्त जीवना कवितीर्था कामशापं श्रवण मंगलम श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना तव कथामृता सप्त जीवना कवितीर्था कामशापं श्रवण श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना 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 सप्त जीवनां कविवीरितां कामशापं श्रवण मंगलं श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना 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 अमृतं तप्त जीवनं कविवीरिता कामशापं श्रवण मंगलं श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। ताड़ी पाड़ो तुम्हारा
रे बीजी ताड़ी ना होय जो ताड़ी पाड़ो तुम्हारा श्यामली बीजी ताड़ी ना होय जो ताड़ी पाड़ो तुम्हारा श्यामली